Hello, everyone. A very logical day to all of you. So, April 12th, the first editorial of today is the China chill. Chill ka matlab, if you remember, we have done this word a few days back with the chilling effect. ठीक है, chilling effect का मतलब ऐसा ऐसा effect जो कि हमें डरा दे, जो कि threatening हो, which is a cause of worry or a cause of concern. So that is the chilling effect that something has on us. So now what the author is giving is the China chill. So let us see how is China disturbing us now. So, reading with this passage, the China India war of words since April 2 over Beijing's renaming of 11 places in Arunachal Pradesh, the third time it has done so since 2017, escalated a notch higher with the Union Home Minister Amit Shah's visit to the state April 10th. So, escalated, increased. This upward arrow is a sign of increase. ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं जब हम ऐसा करते हैं. A notch higher, notch का मतलब होता है slightly higher. ठीक है, he is a notch better at cricket than his brother. So a notch higher, a notch further मतलब एक जरा सी step आगे. The External Affairs Ministry rejected the latest renaming move outright. During his visit, Shah reiterated the message that India will not allow even a needle point sized part of its territory to be encroached. Reiterated, repeated. बार बार उन्होंने कहा है ये कि हम इतना सा भी नहीं देने वाले हैं लैंड. फिर वो तो रीनेम करते हैं तो क्या हो जाएगा वो एनक्रोचमेंट. एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड एनक्रोचमेंट, राइट. So it is like you are trespassing. वो easy word हो जाएगा trespass करना. Trespassers not allowed. कभी देखा होगा ना sign ऐसा. Trespassers not allowed. So what are they doing? They are encroaching. Now the Chinese Foreign Ministry said the activity of the senior Indian official in Zangan, that is China's name for Arunachal, is not conducive to the peace and security in the border areas if Beijing truly believes, as it proclaims now and then, that the boundary issue has to be resolved through bilateral talks. Most recently, its envoy in Delhi said this. There should be no place for pushing boundary claims through military moves or via cartographic aggression. मतलब अगर वो चाइना चाहते हैं कि हम बायलैटरल टॉक्स के साथ बातचीत के थ्रू ये मसला हल करें, दैट मीन्स वी शुड रिजॉल्व दिस मैटर अबाउट दिस Arunachal Pradesh and whatever they are doing, renaming the places, right? So they should come up with the talks. What they said is claiming all these things through military moves is not right, or via cartographic aggression. Cartography means, or cartographist would be a person who draws maps. So cartographic is through maps. तो मैप्स इन नया मैप निकाल देंगे. चलो आज अरुणाचल प्रदेश चाइना में ऐसा मैप से धीरे 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 करके अपने पोर्शंस, इंडिया के पोर्शंस अगर वो अपने नाम पे अपने मैप्स में दिखा दे रहा है, that will be not correct according to the author. Now, due to these actions, a view has gained ground in India that Beijing is not interested in settling the border row. तो border issue, border row, border dispute, border fight, जो कुछ भी होता है border पे, तो row का meaning हो जाता है dispute या fight. ठीक है, it can be used in any way. एक street पे भी अगर हो जाता है तो there was a row, that is a ruckus. ठीक है, झगड़ा होना वो. तो यहाँ पे बॉर्डर पे झगड़ा होता है क्यों? बिकॉज बीजिंग इज नॉट इंटरेस्टेड इन सेटलिंग दिस बॉर्डर इशू. So therefore they are coming up with all these moves, the military moves and the cartographic aggression that is given here in the paragraph. So India is also watching how China attempts to intimidate Taiwan in ways hardly befitting a country of its size and the superpower status it claims. So Taiwan is a small nation and they are trying to intimidate. Timid word का मतलब होता है, tim का मतलब होता है fear. तो intimidate करना मतलब cause fear in those countries. So Taiwan में they are trying to threaten or causing fear in Taiwan. तो इतनी बड़ी चाइना और इतना छोटा सा Taiwan, तो उसे क्यों डरा धमका के मतलब अपनी तरफ ले लेना? This does not befit a country of the size of China. तो वो नहीं होना चाहिए. So now here you can see what China is doing. It is trying to take portions of
different countries, or maybe a few from our countries, not maybe a few from our country and other countries, it is like threatening or intimidating to get all those things in their name, whether it is by a military action or it is through the cartographic aggression. नियरर होम का मतलब इंडिया की तरफ और पास में आते हैं, तो इट इज क्लियर दैट द प्रेशर ऑन टाइनी भूटान टू सेटल इट्स बाउंड्री इशू विद बीजिंग इज इनॉर्मस. छोटा सा ताइवान उसे डरा रहे, छोटा सा भूटान उसके पास इतना बड़ा काम है क्या, उसके साथ भी बाउंड्री इशू है चाइना का. During the visit of King Jigme Khesar Namgyel, India kept the focus on its long-standing economic and development cooperation with Thimphu, but also sought to make clear that there are three parties to the dispute at some places on the LAC. As Bhutanese Prime Minister Lotte Tshering also stated in an interview to a Belgian newspaper, but regardless of its special relationship with Thimphu, देखो यहाँ से ऑथर ने अपना ओपिनियन देना शुरू किया. यहाँ तक तो था कि इंडिया सही है, इट इज हेल्पिंग भूटान, यहाँ तक तो ठीक है, इकोनॉमिक हेल्प हो रहा है, डेवलपमेंट कोऑपरेशन कर रहा है, एवरीथिंग ओके. बट चाइना एंड भूटान इवन दे हैव एन इशू, द बाउंड्री इशू, right? So what according to the author says here from the word but, regardless of its special relationship with Thimphu, Delhi should be prepared to be surprised. ठीक है, कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए जब थिम्पू ने चाइना की, अगर अगर थिम्पू ने चाइना की बात मान ली तो इंडिया को सरप्राइज नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स इंडिया शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस particular action may whenever it may take place or if it takes place also. So India should be prepared. You know, it says like be prepared for the worst and hope for the best. ये होता है हमेशा. India should be prepared for this. So if one day Thimphu, that is Bhutan, is going to join hands with China, so India would be alone. और इंडिया को सरप्राइज नहीं होना चाहिए, इंडिया को उस तरफ से सोच समझ के अपने को खुद को उस तरीके से तैयार रखना चाहिए. Prime Minister Tsering's assertion that there is no intrusion by China in Doklam, contradicting the evidence on the ground, but there was an intrusion, इन्वेजन. तो चाइना ने डोकलम क्षेत्र में इन्वेड किया था, लेकिन भूटान ने, थिम्पू ने मना कर दिया, बोला ऐसा कुछ नहीं किया चाइना ने. सो नाउ व्हाट हैपेंस, these two are contradictory things, but on the ground we had the evidence. So it shows that Delhi, which has not acknowledged incursions into its own territory in eastern Ladakh, cannot expect Thimphu to hold out indefinitely against China on its own. ठीक है, इसका मतलब अगर दिल्ली भी ऐसा कर सकती है कि इट इज नॉट एक्नॉलेजिंग कि चाइना अपने एरिया में आ गई है, जब दिल्ली ये नहीं मान रहा, तो थिम्पू तो छोटा सा एरिया है, छोटा सा रीजन है, छोटी सी कंट्री है भूटान, फिर वो कैसे मान लेगी कि चाइना ने इन्वेड किया है. ठीक है, सो दिल्ली शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. After all, in 2017, after Delhi declared victory for negotiating a disengagement with Beijing at the Tri-Junction area of Doklam, did it not distance itself from the continuing Chinese presence further up the Doklam Plateau, despite the close security cooperation that saw Indian troops face off with the PLA on Bhutanese territory for 73 days that summer? आमने सामने आर्मी थी. इसका मतलब प्रॉब्लम तो उस ट्राई जंक्शन एरिया में चल ही रहा है. भूटान वुड हैव टेकन अवे इट्स ओन मैसेज फ्रॉम दिस. भूटान ने भी इससे कुछ सीख लिया होगा. दिल्ली शुड नो दैट नथिंग कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड इन एन एटमॉस्फेयर ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दैट External Affairs Minister S. Jaishankar has described as fragile. Fragile means it is so easy to be affected, right? It can any day break down. हम फ्रेजाइल ग्लास को बोलते हैं फ्रेजाइल, हम ऐसी चीजों को बोलते हैं ना फ्रेजाइल, वो जो कार्टन्स पे भी लिखा रहता है इट इज फ्रेजाइल, दैट मीन्स इट इज इजीली ब्रोकन, सो हैंडल विथ केयर. सो दिस सिचुएशन ऑल्सो फ्रेजाइल, इट कैन एनी डे ब्रेक. दैट मीन्स भूटान में कम अप अगेंस्ट अस, भूटान में गिव इन टू चाइना. सो इंडिया, दिल्ली हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी ऑफ दीज आउटकम्स. ये बात हमें समझ में आनी चाहिए. So as a nation, the Indian leadership has to act with the aim of building deterrence even while making serious attempts to find peace with
चाइना। तो इसे दो काम करने हैं, एक बिल्डिंग डिटरेंस, स्टॉप होना चाहिए किसी चीज को, दूर रखना चाहिए, while making serious attempts to find peace with China. So this is an ongoing process. ये तो होना ही है. That should be with the bilateral talks. But then when China is not stopping that what do you say, that encroachment, right? So India has to be prepared for the worst outcome. Why? What is happening in Taiwan is given one thing. Example, what is happening in Bhutan is another thing. So the major point of the author becomes that, see, India needs to be prepared for any of these outcomes. Why? Because China is not ready for proper talks and it is on the line of actual control. It is actually starting the renaming of the Arunachal Pradesh areas, or it is intimidating its own neighbors, Taiwan and Bhutan. तो अगर समराइज्ड वर्जन हो जाता है, हमें समझ में आ जाता है ये पैसेज का, आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन बिकम्स quite easy then. So let's see what the main idea is. The Beijing's posture on Arunachal Pradesh borders on intimidation, raises concern it is not keen to resolve border dispute. Right? Not keen to resolve, raises concern, मतलब दिल्ली को सोचना चाहिए, ये चिंता का विषय है, ये हो गया. Not keen to resolve मतलब चाइना हेल्प नहीं करने वाली है, चाइना इसे सॉल्व नहीं करने वाली है, प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. Why? Because it is trying to intimidate its neighbors, Taiwan. And intimidation किसका हो रहा है? Taiwan का and Bhutan का. ठीक है? So by intimidating the neighbors, China is actually displaying that it doesn't want to resolve the issue through the bilateral talks, right? So this becomes a cause of concern for India. Beijing's posture. Now, posture here means what? Beijing's attitude, its opinion. ठीक है, वो क्या सोचता है, उसका स्टैंड क्या है, अरुणाचल प्रदेश पे वो क्या मानता है, दैट विल बी इट्स पोस्चर और इट्स एटीट्यूड. So in a nutshell, we have this: Beijing's posture on Arunachal Pradesh borders on intimidation. Borders मतलब just on the border, margins पे है वो. Intimidation होता है, raises concern, it is not keen to resolve border dispute. So I hope you have understood this much. Let's come to the vocabulary part of this. Come on. So posture is attitude, position, deportment is a better word. For those who know the posture, attitude, position पता है, लेकिन अब एक और word add कर सकते हो तुम अपनी dictionary में, वो है deportment. Department नहीं है, deportment है. Your conduct, your behavior, your attitude, your thinking, your mindset towards a particular topic. Intimidation, as I said earlier, Tim, is related to fear. So by causing fear in someone, threatening, that is creating pressure. Bullying हो सकता है, तो आप intimidate करते हो, मतलब you may be an elder sibling and what you are doing is intimidating your younger brother or your younger sister. तो bully करना हो जाता है. और coercion का मतलब होता है force. Escalated, escalators हम यूज करते हैं, मॉल्स में जाएंगे, घूमने जाएंगे, escalators में जाएंगे, right? So that is increasing gradually. So increased, accelerated, heightened. So that is escalation. Notch, as I said, slightly higher. So nick, if you remember, nick of a time हमने किया है ना, nick का मतलब होता है एकदम फटाफट वाला. A slight is the meaning there. Reiterated, repeated, retold, echoed. Encroach, जिसे अतिक्रमण कहते हैं ना, encroachments. तो वायलेट, ट्रेसपास, इन्फ्रिंज, इम्पिंज. तो वायलेट और ट्रेसपास दो इजी वर्ड्स हैं, जो से चाहिए वो इजी वाले वर्ड्स लिखेगा डेफिनेटली, सो दैट यू आर एबल टू रिमेंबर. इन्फ्रिंज एंड इम्पिंजमेंट इज अनदर बेटर वर्ड फॉर इट. कंड्यूसिव इज बेनिफिशियल, कंडक्टर्स होते हैं उस तरीके से कंड्यूसिव एटमोस्फियर कर सकते हैं हम, right? So if I talk about conducive atmosphere, it would be advantageous, beneficial, and favorable. Fragile is brittle, delicate, to be taken care of, right? It can break easily. Row, as I said, disorder, clamor, ruckus. Row can be dispute.
assertion, assert something मतलब बड़ा strongly कुछ कहना, तो declare से declaration आ जाएगा और affirmation आ सकता है, something that is strictly stated, stated strongly. इंट्रूशन इंकर्शंस मैंने एक ही साथ लिया है क्योंकि तीन दोनों का मीनिंग इन्वेजन है. सो नाउ यू कैन सी इंट्रूजन, इंट्रूड करना, इंकर्शन अंदर की तरफ कर्व हो जाना, इन्वेजन इज टू वेड इन, टू वॉक इन. तो इन्वेजन, ऑल दीज थ्री वर्ड्स, and therefore they create disturbance. People coming into one region which is not theirs will be infiltration. Incursions मैंने यहाँ लिख लिया है, और interference. ठीक है, ये कुछ वर्ड्स एक साथ लिख लेना. डिटेरेंस इज प्रिवेंशन और डिस्करेजमेंट. आप किसी को टू डिटर somebody means to see that that person does not do the work. So prevent कर सकते हो, ये रहा prevention वाला word. So something that is stopping them from doing the work, that is to deter. So that's all for today, and see you tomorrow with a new set of words, with a new article, and I hope you're going through the previous ones that you had missed, because that was a resolution of the week. So in the middle of the week, we'll remind you of the resolution, and definitely you have to do it. That's all for today. Thank you.